हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम जेरूसलम। और आज मैं आया हूँ यहाँ पे वेस्टर्न वॉल टनल्स का टूर करने। आज का प्लान ये है कि पहले वेस्टर्न वॉल टनल्स का टूर करूँगा और उसके बाद एक और टूर है वो करना है, और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि शाम को हेब्रोन मस्जिद इब्राहिमी जाऊँ, जो कि यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए एक अहम जगह है, क्योंकि वहाँ पे हज़रत इब्राहिम और उनके बेटे और उनकी बीवियों के मकबरे हैं। So we are going in. Our tour is starting, and this very nice lady will be our guide throughout the tour. My pleasure to welcome all of you to the Western Wall Heritage Foundation Tunnel Tour. My name is Batya Davis. We're going to be together for about an hour. There's no facilities inside, so I hope you've taken care of that. And photography is absolutely encouraged. Please feel free to take photographs. Flash is fine. We would like you to be able to remember something of your one. Slow enough? Yes. Fast enough? Figure out where we are and possibly even why. Have you seen this building outside? Does anybody know what it is called? Dome of Rock? What? Dome of Rock? Dome of the Rock, exactly. Thank you. What would you expect to find under a building called the Dome of the Rock? A rock. Es-Sakhra. That's Arabic. Evan Hashusiyah. That's Hebrew. And if you read the Bible, Mount Moriah, the hill where 3,000, he says, whoop, I've got a beautiful palace. Any idea why? David was a general. Shlomo. Shlomo sounds like what Hebrew word you might find in the whole world. And then, boom, things start falling apart. That tells my friends. And so we rebuilt a second temple, kind of small. It would just have to do, and so it did. Until and they said, you know what? He's probably going to want us to build. That was Herod. The biggest, the best, and the most beautiful. 144,000 square. It was quite a beautiful building, but it had none of the miracles. And people came from all around to see it, to pray, and to talk about the concept of having one God. For several hundred years, not much happened. And then in 691, Abdel-Melech, evidently today. It has been highly preserved, but it is the same idea. Now this building was built over the mountain, Mount Moriah. In the Islamic tradition, that is where Muhammad went up to heaven. Interestingly enough, in the Islamic tradition, meeting Moses on the way up. So no matter how you slice it, this seems to be a place of connection between heaven and earth, and a place for prayers to go upward. Once the Muslims were here, we became Hemi, second-class citizens. That's a warrior. Standing off against him was Richard Coeur de Lion, also an amazing warrior. These guys were evenly matched, totally. And so were their fighting forces. And they began fighting, and they quickly realized, being intelligent men, both of them, that they are simply going to destroy. And the Crusaders get a piece, a very little piece by the coast. And the Muslims get a much bigger piece, everything else, including Al-Quds. Make sure the Crusader does not come back. 700 years ago, the Mamelukes took this very seriously, and look what they did. They filled in the entire Tyropian Valley with arches and vaults. On top of those vaults, they built their buildings. Right, basically, that is the Muslim quarter you see today. Most of our tour today, we are going to be walking under ancient vaults. Entered inside, turn left, and are standing in this room. Now, all of these rooms are covered with vaults. We are going to head east. Dangerous. So, we'll just leave it at that. Any questions? उर्दू हिंदी वाले दोस्तों के लिए बताता चलूँ कि हमारी गाइड ने
हमें पहले हैकल सुलेमानी और दूसरे हैकल सुलेमानी की तारीख़ के बारे में बताया कि ये एक नीचे पहाड़ी थी जिसके ऊपर ये टेंपल बनाए गए थे। कैसे टेंपल बनाए गए, कैसे वो तबाह हुए, वो सारी हिस्ट्री बताई। और फिर डोम ऑफ द रॉक कब बनाई गई, उसके बाद बताया कि हज़रत उमर का दौर आया, उस दौर में ज्यूज़ यहूदी सेकंड क्लास सिटीज़न थे, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बकौल हमारी गाइड के हमें रडार के अंडर रहना पसंद था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में यहूदियों को रियासत की प्रोटेक्शन हासिल थी। ये सारी बातें मैं अपनी याददाश्त के मुताबिक बता रहा हूँ और जो कुछ हमारी गाइड ने बताया उसके मुताबिक बता रहा हूँ। तो अगर मुझसे कोई तारीख़ बयान करने में कमी बेशी हुई हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट नॉलेज मैंने वही बताया जो हमारी गाइड ने बताया था। हमारी गाइड ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी ज़िक्र किया और उसको एक अजीम जंगजू और फातेह करार दिया। इसके बाद हम टनल्स में आगे रवाना हुए। क्यों ना इस तारीखी जगह पे एक सेल्फी ली जाए। Has a problem with water. Can we move around just a bit? So you... Okay, I think we're all here. We are under these last double vaults of our bridge, and we are standing on through, but this has become one-way glass and it's hard to see down, being put in place. Now, this entire area is sealed off. This is to pull these two blocks out of the wall. He sticks his head in there and you realize area. He was hoping this would be a bit west of that, but it wasn't. It's right in the middle of the building. हमारी गाइड ने ये भी बताया कि सदियों पहले यहूदियों का कत्लेआम करने वाले कहते थे कि हम तुम्हारी नस्लों को मिटा देंगे। आज हम यहूदी उनको कहते हैं कि देख लो, हम यहाँ थे और हम यहाँ पे हैं, लेकिन तुम कहीं नहीं हो और ना तुम्हारा कोई नामो निशान है। और ये बात साबित करती है कि यहूदी कौम फाइटर है, सर्वाइवर है। Standing up there, which makes me feel good because I'm here an awful lot. So it's interesting. It is. And the reason we built here is because of the Western Wall. The synagogue is facing the Western Wall. Now, when you look at the Western Wall, it is not one unified wall. Please remember, and it's part of a block that extends on both sides. You got a little problem because our aqueduct is busily taking all its water and filling all the cisterns up there. And if you don't go up on the Temple Mountain, you don't have access to the water. Unless in our Kotel, where you put the Torah scroll, this one is a bronze pomegranate. I know nothing else like this exists anywhere in the world because it was very hard to make. You could only do something like that, I believe, with a computer. Grid or bar or anything. It's just the letters delicately touching each other. And for those, anybody read Hebrew? Solomon uses the word Kotel to refer to that. It's much deeper. लगता है कि ये प्रे कर रही हैं। इन सुरंगों में
वेंटिलेशन का बहुत अच्छा इंतज़ाम था और बिल्कुल भी अंदर घुटन महसूस नहीं हो रही थी। Cistern with good quality thick plaster, held water for several hundred years. Look down here to the bottom. You are probably looking at the bottom of the Western Wall. And the name of our state is Israel. Shabbat Shalom. David Ben Gurion declares independence. The next day, our 5 neighbors attack, starting off with blowing up a bus. Bullets packing with gunpowder under the kindergartens where their children are going. Again, right under the noses of the British. That's the Ayalon bullet factory down in Rehovot. I strongly recommend it. Ben Gurion did something very brilliant. If you want to read about that, the book is Cast a Giant Shadow. The movie is Cast a Giant Shadow. It will let you know how far we had to go. And sadly, walked out through Zion Gate to spend Friday night in a church, and then rolled down the hill Shabbos morning and scattered ourselves to the winds. Collecting intel, incredibly talented young man, incredibly imaginative young man, and he told us in 1967, yes, they are getting ready to attack. You had better preempt. And so Monday morning, June 5th, we did. We got over all the Egyptian planes while their pilots were out of their planes eating breakfast. Hey, that's cool. Just blow them all up. Bum, bum, bum. No, not that one. That's fake. Bum, bum, bum. Not that one. Bum. We blew up the entire Air Force. Very little loss of life because they were all still breathing. And that meant after 19 long years, we were able to come back to the Kotel. Most people were praying, celebrating, singing, dancing. Some people with a slightly more practical bent by what is today the men's prayer section. That was filled with dirt. Chaim Herzog, who brought this book, we've actually found the whole thing. As you walk through it, and we redid this during Corona, so it's much nicer if you buildings that are holding up the Muslim quarter, built by the Mamelukes. If we could now get rid of all of this, just push the delete button, pretend like you're standing. How does that work? Well, let's say you want to get and as the built wall bumps into the bedrock, that's what you can see by Haziz, by Haifa, places like that. This is more squished. Any seashells or little creatures. यहाँ पे टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन से मुतालिक एक वीडियो दिखाई गई।
is impossible. Sings in as lonas to the east, forward to Zion looks the eye. Our home will not be lost, the home of 2,000 years, to be a free people in our land, the land of Zion. Of the rock that is the Temple Mount. If you were to go all the way up, you would find yourself on the Temple Mount, northwest corner. The Romans built a siege ramp right here to get up on top of the Temple Mount and destroy the temple. That was around 70 of the Common Era. Before they did that, however, Herod had dug a moat. See here, it continues beyond that wall. At the western corner of that moat, water was dripping in, and Herod's stonemasons dug this pool to collect that water. That water had originally been meant to go down the African era. 60 years after the temple was destroyed, there was a man named Hadrian. He was the Roman emperor. There was a rabbi named Rabbi Akiva, and there was a Palestine, for the Philistine, David's mortal enemies. Hadrian was a smart man. He wanted to wipe out the Jewish nation, and he figured Jerusalem and Judea was what held them together. He was very correct. The Jews began to push back. We had a good general. For a while, we were very successful. We wiped out. You can expect an answer. And the answer wasn't long in coming. Most of Rome's military might was sent eastward across, and on top of the Roman parade ground, he builds an arch. And he marches his soldiers around and says, "World, we've come back. It hasn't been an easy journey, but we have come back and we're digging. We're meant to be gatekeepers. We're meant to keep this city open and available for everyone. Thank you so much for coming. Those of you who are going outside into the Muslim quarter, please simply go behind me." ठीक है जी, टूर ख़त्म हो गया है और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। लोगों का सर लग के ज़ख्मी ना हो, उन्होंने ऊपर कुशन तक लगाए हुए हैं। वाह, अच्छा इंतज़ाम है। तो दोस्तों, ये है वेस्टर्न वॉल प्लाजा जेरूसलम। जो वेस्टर्न वॉल है, ऊपर यहूदियों का सबसे मुक़द्दस मुकाम, ऊपर उसकी जो चौड़ाई है वो बहुत कम है। जो असल वॉल है उसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी के लिए मैंने वेस्टर्न वॉल टनल्स, इसके नीचे जो सुरंगें हैं उनका मैंने टूर बुक किया था और बड़ा ज़बरदस्त टूर था, काफ़ी मालूमाती टूर था। तो मुझे खुशी है कि मैंने ये टूर बुक किया और ये वक्त का ज़िया नहीं था, बहुत अच्छा टूर था, मज़ा आया। दोस्तों, वेस्टर्न वॉल के आज के दिन मैंने 2 टूर बुक किए थे। पहला टूर मैंने कर लिया है, अब जो दूसरा टूर है वो मुझे करना है। दूसरे टूर में ये है कि जो सेकंड टेंपल था उसको एडवांस्ड वर्चुअल टेक्नोलॉजी की मदद से ये हमें दिखाएंगे। ये टूर तकरीबन आधे घंटे में शुरू होने वाला है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर रिलैक्स करूँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा, थोड़ा बाहर जाता हूँ, बाहर की थोड़ी सी वीडियो बनाता हूँ और फिर वापस अंदर आता हूँ। तो ये वेस्टर्न वॉल का कंपाउंड है। काफ़ी सारे टूरिस्ट और पिलग्रम्स यहाँ पे मौजूद हैं। और ये रुए ज़मीन पे यहूदियों के लिए सबसे मुक़द्दस जगह वेस्टर्न वॉल। लेफ़्ट साइड पे
यहाँ पे मर्द इबादत कर रहे हैं। दिन का टाइम है तो इतना ज़्यादा रश नहीं है। और राइट साइड पे ख़वातीन इबादत कर रही हैं। Slown us to the east, forward to Zion, look. इस मौका पे एक सेल्फी हो जाए। Our तो दोस्तों ये दूसरी बार है कि मैं जेरूसलम आया हूँ और कल रात को भी मैं यहाँ पे आया था, जूइश क्वार्टर, मुस्लिम क्वार्टर, और आज मैं फिर ख़ास तौर पे जूइश क्वार्टर के लिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे जो इनकी अट्रैक्शंस हैं उसको मुझे विज़िट करना था। तो अभी मेरा एक और टूर है जो कि आधे घंटे में शुरू होगा। तो अब मैं जा रहा हूँ, जाके मैं चेक करता हूँ और दूसरे टूर के लिए कि क्या डिटेल्स हैं और उसका जो मैंने ये बैंड वगैरह लेना है वो मैं लेता हूँ और जाके कुछ देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद दूसरा टूर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं निकलूँगा, देखूँगा थोड़ा, अगर ओल्ड सिटी में वॉक करनी हुई तो वॉक करूँगा और हेब्रोन जाने की कोशिश करूँगा। ये जो नीचे लड़के हैं, लगता है ये रवायती अंदाज में ड्रेसिंग करके अपनी इबादत वगैरह करने लगे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अंदर उन्होंने एक थिएटर सा बनाया हुआ है और उस थिएटर में एक वीडियो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दी जाती है और वो जो स्पेशल गॉगल्स होते हैं ना, जो वीडियो गेम वगैरह खेलते हुए भी वो लगाते हैं, वो गॉगल्स वो लगा देते हैं और उसके अलावा साथ एक हेडफोन देते हैं। तो उन्होंने 10 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है। उस शॉर्ट वीडियो में ग्राफिक्स की मदद से उस ज़माने का पुराना टेम्पल हैकले सुलेमानी दोएम, टेम्पल ऑफ सोलोमन 2, उसकी उन्होंने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाई है कि उस ज़माने में एनवायरनमेंट कैसा हुआ करता था और कैसे वहाँ पे इनके जो पिलग्रिम्स थे, जो यात्री जिसको कहते हैं हिंदी में, या फिर आज़मीन कहते हैं उर्दू में, वो किस तरह वहाँ पे आते थे, किस तरह उनकी ज़िंदगी थी, कैसे वो वहाँ पे अपनी प्रेयर्स वगैरह करते थे और किस तरह का वो टेम्पल था। और फिर वो टेम्पल तबाह हुआ। 2000 साल बाद ज्यूज़ इस इलाके में वापस आए और आज वो बिल्कुल वैसे प्रे करते हैं जैसे उस ज़माने में इनके एनकेस्टर्स किया करते थे। तो ये वीडियो थी, छोटी सी वीडियो है, शॉर्ट वीडियो फॉर 10 मिनट्स, बट इट वाज गुड। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आई। तो दोस्तों अब मैं जूइश क्वार्टर से निकलता हूँ और दमस्कस गेट की तरफ जाता हूँ। दमस्कस गेट, दमिश्क गेट, और मेरी कोशिश होगी कि मैं जाके हेब्रोन की बस पकड़ूँ। यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि 1967 से पहले ये जेरूसलम ओल्ड सिटी उर्दन के कब्ज़े में था और उस वक्त यहाँ पे इस शहर में मुसलमानों के अलावा किसी को भी दाखिले की इजाज़त नहीं थी। 1967 की जंग में इसराइल ने इस शहर के ऊपर कब्ज़ा किया और उसके बाद उन्होंने जेरूसलम ओल्ड सिटी को तमाम लोगों के लिए खोल दिया। यहाँ यानी कि यहाँ पे मुसलमान भी आ सकते हैं, यहूदी भी आ सकते हैं और क्रिश्चियंस भी आ सकते हैं। in Jerusalem. तो मैं वेस्टर्न वॉल के एरिया से निकल रहा हूँ। ये देखें, जो लोग आ रहे होते हैं उनकी तलाशी होती है और सामान स्कैनर से गुजारा जाता है। एक चीज़ मैंने नोट की है कि शहर में जो वॉक के रास्ते हैं वो काफ़ी छोटे हैं, जबकि ड्राइव करने वाली रोडें जो हैं वो लंबी पड़ती हैं। उनका रोडें हैं भी बहुत छोटी छोटी, इस वजह से ट्रैफिक को ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने तो यही देखा है कि भाई बस लेने से या कैब लेने से बेहतर है कि बंदा वॉक कर ले। बंदे के पास सामान हो फिर तो मजबूरी है कैब करना, लेकिन वैसे एज अ टूरिस्ट वेस्ट जेरूसलम या ईस्ट जेरूसलम में घूमना हो तो
वॉक बेस्ट ऑप्शन है। वैसे मैं बर्गर वगैरह खा के निकला था, लेकिन मुझे दोबारा भूख लग गई है। लेकिन मैंने यहाँ से नहीं खाना, क्योंकि यहाँ पे जो ओल्ड सिटी में जो मुसलमान हैं, शॉपकीपर ज़्यादातर ये ठोक के रेट्स लगाते हैं। 35 दरम के इक्वल बनता है 35 शैकल। 35 शैकल का एक अनार का जूस का गिलास, और अगर आपने खाना खाना है तो कम से कम 40 शैकल से कम का खाना नहीं है। तो मैं मेरे ख्याल से फ़लस्तीनी एरिया में जाऊँ, वहाँ पर निस्बतन सस्ता होगा, और वहाँ पे जाकर मैं कुछ खाने को खा लूँगा। ये कोई टूरिस्ट ग्रुप है। क्या बात है जेरूसलम ओल्ड सिटी की, और ख़ास तौर पे ये जो गलियां हैं और जैसे इनको मैनेज किया गया है और जैसे यहाँ पे सफाई रखी गई है, कमाल है। इस वीलॉग का मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। शुक्रिया।